Good evening. My voice is audible to you. Can you hear my voice? Okay, I think you can hear my voice. So let's start from where we have left in the last class. Let me share the screen for you. I hope you can see my screen, right? Match, you can Yes, see. sir. Yeah. So in the last class, we were discussing about the NP, means few programs we have discussed, and we have also discussed about min-max normalization, right? If you could recall. So the problem we have done is this one, where first we have created an array, Yes, sir. right? You can take a screenshot of this so that Yes, later sir. you can also practice, right? Then we try to find out the average, Okay, sir. and then these are the programs. Then we have found out the TOPA, right? And also we have found out who failed. So, and this is one important application of means NP, or you can say NumPy, that how to actually deal with some missing values. You know, when we are collecting the data, some values may be missing, right? And that is known as handling missing Sir. data, right? So we call it as NAN. Remember, NAN, not a value. Okay, so that NAN symbolizes these values are missing. Now we can deal with that. First, consider this one where data is equal to np.array. We have taken few values. Intentionally, we have put, you can see the last one, np.nan, right? इसका मतलब ये है कि ये जो थर्ड वैल्यू है, that value is missing. Similarly, 45, np.nan, 56. This means that the second value is missing, right? Other values are okay. So we have taken this value, right? We have collected them in an array, putting it in the data. Now try to print whatever the values we have, okay, before cleaning. Means we have not yet done some cleaning process, so we are printing it. Now, what we can do, we can replace the missing values with column min, right? मतलब जो अभी आपका जैसे ये वैल्यू मिल रहा है np.nan, ये थर्ड कॉलम में है, राइट? थर्ड कॉलम मीन्स np.nan 56 95 70. तो अभी अगर हमें np.nan के साथ डील करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉलम है थर्ड कॉलम का मीन को इसमें रिप्लेस कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे विद द हेल्प ऑफ द थर्ड कॉलम मीन, right? So for that, we have calculated the mean, and this is the line. You just take a screenshot after the class. You can directly go through the practicals, right? So call means we have put the values there, right? And then INDS where NP dot where NP is then data. So we have put that. Then we replace the value with the column mean. So now whatever the values we have earlier as nan or missing values, now it is been replaced with the mean value. तो ये second line आपको दिखाई दे रहा है. So we have replaced that value with the column mean, and after that we print the whole data set. Okay, तो ये कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. Then this process is known as data imputation. एंड ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं रियल एमएल पाइपलाइंस, मतलब रियल मशीन लर्निंग जो भी एप्लीकेशंस होता है. फर्स्ट थिंग होता है कि वी हैव टू प्री प्रोसेस द डाटा, वी हैव टू डील विद द मिसिंग वैल्यूज, नॉइजी वैल्यूज. सो तो मिसिंग वैल्यूज we can replace them with some mean value, or sometimes we can also replace them with zero, and for that we take this step. ठीक है, and overall this is known as what? Data imputation. I hope it is clear. Yes, sir. Okay. Sorry.
Now, let's come to another important, very, very important library that is known as Pandas. क्या बोला मैंने? Pandas. And Pandas we use for data manipulation and analysis. तो ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि pandas हम किस लिए यूज करते हैं। एक तो हमने पढ़ा numpy, राइट? numpy हमने देखा Yes. न्यूमेरिकल पाइथन, मतलब न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए हम यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द pandas, और pandas को हम यूज करते हैं डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के लिए। जैसे आपका है डेटा फ्रेम, और एक इंपॉर्टेंट बात कि जो पांडा है, पांडा ऑलवेज डील विथ स्ट्रक्चर्ड डेटा, एंड वन सच स्ट्रक्चर्ड डेटा इज डेटा फ्रेम। प्लीज रिमेंबर व्हाट आई कॉल डेटा फ्रेम। ठीक है, तो फॉर दैट आई हैव पुट वन सिंपल प्रैक्टिकल, यहाँ से आपको दिख रहा है, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। आई वांट यू टू डू इट। ओके, सो फर्स्ट लाइन इज Yes. इंपोर्ट pandas एज पीडी। सेम लॉजिक, हम बार बार pandas pandas नहीं लिखेंगे, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एलियासेस। सो इंपोर्ट pandas एज पीडी। उसके बाद जो आप दिख रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द डिक्शनरी, राइट? एंड वी आर कीपिंग इट द डाटा, एंड देन द सेकंड लाइन pd dot data frame, and we pass this dictionary, means dictionary value, and now this is being converted with to data frame। तो ये जो डेटा हमने लिया, ये तो डिक्शनरी था, आप देख के ही समझ सकते हो। ठीक है, की वैल्यूज दैट इज डिक्शनरी, राइट? आप उसको हमने डेटा में रख लिया, और उस डेटा को डेटा फ्रेम फंक्शन में पास कर दिया। ये डेटा फ्रेम फंक्शन उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। डेटा फ्रेम कुछ अलग नहीं है, दैट दैट कीप द डेटा इन ए टेबुलर स्ट्रक्चर, व्हाट आई कॉल टेबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा फ्रेम और अलग चीज नहीं है, वो आपके डेटा को एक टेबुलर फॉर्म में रख देते हैं। तो ये जो डेटा फ्रेम फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, दैट फंक्शन इज यूज टू convert this dictionary or whatever other structure also, but now dictionary into a data frame, then we are just printing it। ठीक है, ये कर लोगे? एक एक लाइन समझ में आ गया? Yes, sir. Okay, please do it after the class। Now, I am again revising the things. I just said that pandas is used for data manipulation, and I have said that we create data frame with that. Okay, now let's again have a theory, or whenever in the exam if asked, then you can write this one। So in the world of data science, data is रेयरली क्लीन, मतलब जो हमारा करेंट पर्पसेस हैं, जिसके लिए हम डाटा यूज करते हैं, डाटा साइंस यूज करते हैं, उसमें डाटा आपको हमेशा क्लीन मिलेगा, हमेशा नॉइस फ्री मिलेगा, हमेशा रेलिवेंट डाटा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। डाटा मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है, डाटा में मिसिंग वैल्यूज होता है, डाटा में इरिवेलेंट डाटा होता है, नॉइजी होता है, आउटलायर्स होता है, राइट? तो ये सबको हमें क्लीन करना पड़ता है। Okay, so it comes in messy spreadsheet. Just a minute. Okay. Okay. It comes in messy spreadsheet, JSON files, SQL databases। So ये अलग अलग चीज है जिससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं, राइट? अब ये जो पांडा, जैसे मैंने बोला था, इन numpy, that numpy stands for numerical python, panda short form is पैनल डेटा। तो हम जो pandas बोलते हैं ना, ठीक है, वो एक्चुअली क्या है? पैनल डेटा। इज इट ओके व्हाट आई हैव सेड? Yes, sir. पैनल डेटा, ठीक है। So this pandas Yes. is the industry standard library built on the top of the NumPy that provides high performance, easy to use data structure। तो जो पांडास है, ठीक है, उसमें हाई परफॉर्मेंस इजी टू यूज डाटा स्ट्रक्चर, जैसे आपको मैंने बोला था अभी, डेटा फ्रेम भी एक डाटा स्ट्रक्चर है। तो pandas फेमस हुआ ओनली बिकॉज ऑफ द दिस टाइप स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, नाउ इसका दो कोर डाटा स्ट्रक्चर, देयर आर टू कोर डाटा स्ट्रक्चर, फर्स्ट इन सीरीज एंड सेकेंड वन इज डाटा फ्रेम। फर्स्ट क्या बोला मैंने? सीरीज, that is 1D, Oh, means one dimensional labeled array। ओके, तो आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हो एक्सेल में एक सिंगल कॉलम, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज। एंड डाटा फ्रेम इज ए 2D लेबल डाटा स्ट्रक्चर, और इसको आप पूरा एंटायर एक्सेल टेबल के जैसे कंसीडर कर सकते हो।
आई होप इट इज ओके। तो मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। Yes, sir. पांडास स्टैंड्स फॉर पैनल डाटा, ठीक है। और इसमें दो डाटा स्ट्रक्चर है, एक सीरीज जो वन डायमेंशनल है, जैसे एक कॉलम को मान सकते हो एक्सेल में, और डेटा फ्रेम टू डायमेंशनल है, एक टेबल के फॉर्मेट में आप मान सकते हो उसको। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो सॉरी, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली यू हैव टू इंपोर्ट दिस लाइब्रेरीज, राइट। हम कैसे कर रहे हैं, इंपोर्ट pandas एस पीडी, और numpy तो करना ही है, बिकॉज ओनली देन वी कैन टेक द हेल्प ऑफ numpy array, right? So import pandas as pd, import numpy as np. Now creating data, we can create a data frame from a dictionary where keys are column names and values are the list of data. तो याद होगा आप लोगों को, आई होप यू कैन रिकॉल दैट वी डिस्कस डिक्शनरी, राइट। डिक्शनरी कंसिस्टिंग ऑफ पेयर Yes, वैल्यूज, मतलब की के लिए हर एक की के लिए वैल्यू होता है, याद है? yes, sir. Very good. So you can see here data name, Alice, Bob, Charlie, David. तो ये है आपका एक particular की वैल्यू, ठीक है। इसमें नेम जो है की है, एंड वैल्यूज क्या है, ये particular लिस्ट। Yes, Similarly one more similarly one more key value is age. Again the values are 25, 35, 35, 22, right? Similarly city, New York, London, Paris, Berlin. So these are some dictionary values. Now, what we will do? We will put this data, ठीक है, put this data into the data frame function. क्यों? ताकि ये जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी क्या है हमारे पास, डेटा। डेटा जो है वो डिक्शनरी है, इसको डेटा फ्रेम फंक्शन के थ्रू हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, डेटा फ्रेम में, ठीक है। तो दिस डेटा फ्रेम, वी पास दिस डेटा डिक्शनरी as a parameter, and as a whole, sorry, it will be converted into one particular data frame, ठीक है। Is it clear? Okay, then we print yes, the sir. value. Okay, yes, very good. So print df dot head to. You can see here this head function, right? ये head function के थ्रू first two lines को हम print कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, first two rows को, ठीक है, two lines को print कर रहे हैं। You can easily check it, right? Just a minute. I'll just, ये देखो, can you see my screen? You can I hope you can see my screen, right? Yes, sir. Okay, so this is Spider where I'm doing the practical. तो यहाँ आपने देखा these two libraries we have imported, and this data is a dictionary, and this here this second this line converted into data frame, and we are trying to print two values. Let's see, we are running it. तो यहाँ कंसोल में देखो, जहाँ मेरा माउस कर्सर है, तो आप देख सकते हो नेम ए सिटी। अब ये किस में बदल गया, दे आर कॉलम्स, राइट। नेम एक कॉलम हो गया, एलिस एंड बॉब वैल्यू है, एस एक कॉलम हो गया, सिटी हो गया, ठीक है। और इसमें दो रोज, बिकॉज वी हैव टेकन df डॉट हेड टू, सो फर्स्ट टू रोज आर गेटिंग इट प्रिंटेड। It's clear. I hope it is clear to you, right? Yes, sir. Very good. Okay. तो ये हो गया। नाउ आपको, you can also do it. So see, now we have converted this dictionary into the data frame. Similarly, you can convert the CSV file also. Similarly, you can convert the Excel file also. CSV is a comma separated values file, ठीक है। That we can easily create with Python also, or maximum time you can see the data set is usually in the CSV file. Similarly, Excel file तो सबको पता है। अगर आप CSV फाइल यूज करोगे तो यू हैव टू गिव द फंक्शन रीड CSV, ठीक है। और दिस dataset dot CSV means the location with the file name where exactly that file is there in your system, right? Similarly, pd dot read Excel. Similarly, this data Excel xx, though this is an Excel file, and you have to give exact location where this file is located. I'll show you one day that how we can create a CSV file. So now data exploration and cleaning. See, in data science, our main task is to explore the data.
इंटरोगेट द डाटा, ठीक है, हमें डाटा को एक्सप्लोर करना है, डाटा को इंटरोगेट करना है, तभी तो आप डाटा एनालिसिस कर सकते हो, राइट? तो बिफोर एनालाइजिंग यू मस्ट इंटरोगेट योर डाटा, राइट? एंड देयर आर few methods that you have to know how to use, right? This one, first one is df.info. It shows the data types and missing null values. क्या है? df.info, ठीक है? ये क्या करते हैं? It shows the data types and missing null values. Similarly, df.describe, ये क्या करेगा? It provides statistical summaries. Statistical summaries माने क्या होता है? आपका आपके जो डेटा सेट है वो सारे वैल्यूज का मीन क्या है? मीन मतलब एवरेज, minimum value, maximum value, quartiles value, all these statistical summaries will be shown to you. ठीक है? Then df.shape, it returns the number of rows and columns. तो ये जो है, these are known as detail inspection method that all the data scientists should know when you are dealing with pandas. So df.info, df.describe, df.shape. Just a minute, I'll show you. Okay. Oh, this one I am already using it. Just a minute. I am using in the letter section. I will show it there only. Okay, then we come to the NaN. I just discussed. Means NaN means what? Can anybody tell me what is NaN? थोड़े पहले मैंने बताया था नैन मतलब जो वैल्यू आपका मिसिंग है, ठीक है? जो मिसिंग है मतलब whenever you goes for collecting the data, sometimes what happen, you may forget to collect a particular value, or your team member may give you some missing values, means some values are not there, then we have to deal with that, right? अभी थोड़े पहले आप लोगों को बोला था, मैंने क्या बोला था कि we replace the value with the एवरेज और मीन वैल्यू, राइट? यहाँ पे मैंने देखा था ना आप लोगों को, ठीक है? दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम np.array, where np.nan, np.nan, सो क्या किया था हमने? इस कॉलम का एवरेज जो वैल्यू है उससे उसको रिप्लेस कर दिया था, ठीक है? नाउ सेम हियर, यू कैन सी हियर, इन रियल डेटा सेट्स NaN माने नॉट ए नंबर, ठीक है? प्लीज याद रखना, NaN stands for not a number. It represents the missing data, and before analyzing we have to interrogate these values, and we have to deal with them with that, means either we replace the NaN with a mean value, or either we replace the NaN value with a zero, ठीक है? तो नाउ ये तो मैंने दिखा दिया था, इसलिए आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन. आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंटरमीडिएट मैनिपुलेशन. Intermediate manipulation means two processes we do. First one is indexing and second is slicing. Okay. Pandas uses two primary ways to select data. That .loc. Can you see my screen properly? Yes, sir. Okay, very good. So .loc means label-based selection, and .iloc means integer-based selection. Okay, .loc, so by name, .iloc means by position. So select rows 0 to 2 and the name column. तो इसके लिए हम एक सिंपल सा कोड यूज किया, प्रिंट df.loc 0 to 2. ये जो दिख रहा है ना कॉलन, कॉलन मीन्स दैट रेंज, मैंने आई वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 2. Okay, then we are printing the value name. Then similarly select first two rows and first two columns. तो इसको कैसे करेंगे? आपका df.iloc, because iloc we use for integer based selection, but loc we use for name based selection, right? iloc, so colon 2 comma colon 2, मतलब क्या होगा? first two rows, first two columns. Just a minute, ये तो किया था. Just. This one also we have done. Okay. हाँ जी.
So first one, what we have done by name, we have collected. ये दोनों तो आपको दिखा दिया था कैसे ड्रॉप एन ए करके वो उस मतलब नैन वैल्यू को ड्रॉप कर दिया था हमने, ठीक है, और मीन से रिप्लेस कर दिया था, दैट वी हैव ऑलरेडी डन. नाउ आई एम शोइंग दिस टू. सो सिलेक्ट फर्स्ट तो क्या है, एलओसी यूज किया है, दैट इज 0 to 2. नेम का 0 to 2 मतलब आपका वैल्यू आ जाएगा एलिस एंड बॉब, एंड दिस टू बीइंग प्रिंटेड. नाउ first, second one is ILOC where we are using the values, same thing, first two. So same value will be printed. Then you can see we can do the filter also. Filter means you have to put certain condition like this का age 25 से ज़्यादा है उसको print out करो. So you can see DF is greater than 25 and we have put the values in the senior and printing the seniors. ठीक है, तो इसका एज का वैल्यू आप देख सकते हो 30, इसका 35. सो दे आर बीइंग प्रिंटेड. ओके, आई होप नो प्रॉब्लम विद दैट. जो वैल्यू हमने लिया फिल्टर किया, फाइंड ऑल द पीपल ओल्डर देन 25. एक सिंपल सा कंडीशन डाटा फ्रेम में डाटा रखा था, किसमें है वैल्यू, एज में, वो ग्रेटर देन 25. और जो वैल्यू मिला हम उसको फिर से डीएफ के अंदर रखा, मतलब दैट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू डाटा फ्रेम एंड वी कीप इट इन द सीनियर्स एंड वी आर प्रिंटिंग इन द senior. Senior is nothing but a variable. Now this becomes data frame, but because we are putting the data frame or assigning the data frame values. ठीक है, प्लीज प्लीज टेक स्क्रीनशॉट. हाँ, ये जो जितना भी कोड्स में दिखाते जा रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट लेके जाना, क्योंकि यू हैव टू प्रैक्टिस दिस. इसका ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, एंड देन दिस वन, देन दिस वन. Now, one more thing is group by. This comes under advanced data analytics. Okay, ये सब हम advanced level में करते हैं. Group by means what? We try to do it for summary analysis, like find the average haze per city. तो हम क्या करेंगे, df dot group by city को हमने group by किया है with respect to what condition, with respect to average age. ठीक है, जो एवरेज एज है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको ग्रुप बाय किया. ग्रुप बाय का मतलब होता है एक ग्रुप में ले आना, ठीक है, और जब ग्रुपिंग करोगे ऑब्वियसली उसमें एक कंडीशन रहेगा. आप ये कंडीशन किया है एवरेज एज. इसको देखते हैं हम. ठीक, average age is this one. So accordingly we have means group these cities: Berlin, London, New York, Paris. Okay. Now merging and joining. We can combine or we can merge two different data sets like we do in SQL join. SQL structured query language, उसमें एक फंक्शन होता है join फंक्शन, जिसमें दो चीजों को हम combine करते हैं. यहाँ पे भी हम combine कर सकते हैं. यहाँ users have to use merge function. Okay, तो देख रहा है pd dot merge df1 df2 on id. सो id एक कॉलम है जिसके पर्सपेक्टिव तो df1 एंड df2 है, इन दोनों को हम मार्ज कर रहे हैं और मार्ज करके मार्ज df में रख दिया एंड प्रिंटिंग द मार्ज df. सी, दिस आर टू डिफरेंट df. ठीक है, दिस आर टू डिफरेंट डाटा फ्रेम्स, बट यहाँ पे एक चीज कॉमन है, दैट इज id, राइट. सो उस, तो कंसिडरिंग दिस id as the common one, we merge these two data frames df1 and df2, and then कॉमन होना जरूरी है. विदाउट दैट यू कैन नॉट मार्ज. सो मार्ज df डॉट मार्ज df1 df2 ऑन id. ये मार्ज हो गया. लेट्स प्रिंट इट. सो यू कैन सी बोथ आर कमिंग. सी id1 तो आ गया, सेल्स आ गया फर्स्ट df1 से, और रीजन आ गया सेकेंड से. सो यू कैन सी नॉर्थ साउथ एंड द सेल्स 100 to 100. इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, take a screenshot. Now we can do some optimization. Optimizations when we try to improvise the performance, right? So when working with millions of rows and now I'm showing you like 10 lines of code or 10 lines of data, 20 lines of data. But in real life, you need to deal with the millions of rows
lakhs and lakhs of rows, and performance matters at that time, right? So there are two processes. Factorization, never use for loops to iterate over rows. Use built-in function that operate on the whole column at once. So एक tips है, means you can say consider as a suggestion, never use for loops. For loops जो हमने पढ़ा था, for loops यूज मत करना तो iterate of rows. उससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, उस कॉलम को देखने के लिए आप ये एक फंक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है? एंड इससे क्या होगा, कम पार्ट मतलब सीपीयू का यूटिलाइजेशन कम हो, सीपीयू का ज्यादा यूज नहीं होगा, बट कम यूज से ही हम वो सेम टास्क कर सकते हैं, राइट? देन कैटेगोरिकल डाटा, कन्वर्ट द स्ट्रिंग कॉलम्स विथ फ्यू यूनिक वैल्यूज टू कैटेगरी टाइप टू सेव मेमोरी. So we always need to convert the string columns. Like you can see dfct dot s type category. Just a minute, I'm showing you. So ये जो दिख रहा है dfct, now it is being converted into some numerical values. कैटेगरी था, अपनी हमने इसको कन्वर्ट किया, ठीक है? सो ऑप्टिमाइजेशन is some high level tasks we do only when we think we know that other parts, or we are some advanced data science specialists, then only we go for it, right? But you have to understand the process some way how we can optimize the performance. One is factorization, and another factorization is important, and second is the categorical. We always convert the string columns with some unique values to category type to set. जैसे कि ये सिटी था, इस स्ट्रिंग को हमने कैटेगरी टाइप्स में कन्वर्ट कर दिया. नाउ यू कैन टेक a screenshot of this, because these are some important function. Like for inspection we have used df.info, right? For statistics we use df.describe. ये दोनों मैंने अभी बताया था ना सबसे पहले. At the very start of the class I told you info and describe. Describes give you the statistics like mean, standard deviation, quartiles. Selections mean how you can filter out the values, like df column greater than or less than x. Then aggregations means summarization of group by, okay, with respect to some condition. Then combination linked to data frames means mars. So all of this we have discussed. Just a minute. Let me give you the code also. You can see my set, right? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Okay, I have sent the code to that chart also. आप इसी स्क्रीन का एक बार आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लो. Please take a screenshot of this. After this class, you will do this everything, and you will show me the output. ठीक है? Yes, sir. Is there any problem? I hope everything is clear, right? Yes, sir. Okay. So I have taken this class because I was busy somewhere, so that's why I could not come. Now I hope now if you can go through the practicals and whatever I discussed today, if you revise them, then that is more than sufficient for today. Okay, thank you. Thank you, sir. Bye.